नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि प्रकाश आप लोगों का अनरियल बैंकर में का फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल के थ्रू आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, लाइक जॉब्स हो, इंटरव्यूज हो, एग्जाम्स हो, बहुत कुछ आपको इस चैनल में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज ये वीडियो है रिगार्डिंग एग्जाम्स को लेकर, इंटरव्यू को लेकर के। तो जो दोस्त लोग मेरे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक IBPS हो, SBI हो और ABYB हो, ICICI हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको जो आने वाले, अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि मैं बैंकिंग से रिलेटेड लगभग थोड़े बहुत मैं टर्म्स जो है खुद अभी तैयार किया हूँ, एक प्रेजेंटेशन। तो प्लीज़ दोस्तों, उसको आप लास्ट तक जरूर देखें। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में, आने वाले इंटरव्यूज़ में कुछ ना कुछ आपको इसमें से मिल ही जाए। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे और जानते हैं कि बैंकिंग के कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में देखने को मिलते ही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और जैसा कि आप देख ही रहे, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर्ड फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स। सो व्हाट इज़ अकाउंट्स। बट उससे पहले दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो अगर पूरा देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि हम उस टॉपिक को लेकर के और हम वास्ट में जा सके और हम डिटेल में बता सकें आपको। तो अकाउंट्स के बारे में जानते हैं पहले। An account is a record of all financial transactions that are related to an asset, individual, transaction, or any organization. It is a major term in the field of accountancy and is conventionally denoted by account. It is also defined as a transaction between a buyer and a seller about payment and dues which develop creditor-debtor relation. What is acceptance? Acceptance is, which is also known as the banker's acceptance, is a signed instrument of acknowledgement that indicates the approval and acceptance of all terms and conditions of any agreement on behalf of the banker. It is very wide term that is used in context with financial agreement and contracts. What is accepting party? The party, either an individual or a group of individual or organization, that accept the terms and condition of a proposed agreement or contract put forth by another party or third party, you can say that. What is account बैलेंस। दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपको इंटरव्यू में, एग्ज़ाम्स में देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो लास्ट तक आप बने रहें, क्या पता आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट जो भी है, आपको एग्ज़ाम्स में, इंटरव्यूज़ में देखने को मिल जाए। तो व्हाट इज़ अकाउंट बैलेंस। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन अ पर्टिकुलर बैंक account along with debit and credit amounts. The net amount is also termed as the account balance. Account reconciliation. Account reconciliation is a process with the help of which the amount balance can be easily verified. Account reconciliation is usually not at the end of a week, month, financial year, or the end of any financial period. It is usually done with the help of receipt, ATM notes, बैंक स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों, जैसे कि ABYB का जो इंटरव्यू होता है, एग्ज़ाम्स होता है, उसमें आपको एक माइक दिया जाता है जिसमें कि आप अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। आप अपना टोन जो है इसी टोन में रखिएगा, थोड़ा क्लियरली बोलिएगा तो बेटर होगा आपका इंटरव्यू सिलेक्शन में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अकाउंट स्टेटमेंट। A financial record that indicates the transaction and its effect on account, usually bank account. In terms of debit and credit, sometimes an account statement also carries some precious detail like the date of transaction, code of transaction, mode of transaction, sales, purchase, etc. Accrual basis. Accrual is the process of accumulation of interest or money. Accrual basis, which is also known as the accrual convection, is the method by which investor, economist, and businessmen count the number of days in a month or years
of the most common example of accrual basis is the 30 odd divided by 360 convention, wherein the accrual basis is calculated by assuming that every month has 30 days. Accrual basis is often used as the common parameter for the calculation of interest and returns. Accrued interest. Accrued interest is the interest accumulated on an investment but in but is not yet paid. Often, accrued interest is also termed as interest receivable. Some banking books prefer to call it as the interest that is earned but not yet paid. दोस्तों ये प्रेजेंटेशन मैंने खुद से बनाया है. सो नेक्स्ट हम चलते हैं. व्हाट इज़ ACH? ACH is the abbreviation of the banking terms automated clearing house. The automated clearing house operate on a national level and helps bank and financial institute in the clearance of balance and negotiable instrument that are used at the personalized as well as the mercantile modes of transaction. इसे को हम कंटिन्यू करते हैं. ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस ACH. एन ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस इज ए नेशन वाइड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हाउस दैट मॉनिटर एंड एडमिनिस्ट्रेटेड द प्रोसेस ऑफ चेक्स and fund clearance between banks. The ACH is an electronic system and thus minimizes the human work in the process of clearance. It distributes credit and debit balance automatically. व्हाट इज़ एन्युटी? दोस्तों एन्युटीज़ जो है आपको काम आएगा. लाइक अगर आप म्यूचुअल फंड्स के एग्ज़ाम्स वगैरह देंगे उसमें भी आपको एन्युटीज़ वगैरह देखने को मिलेंगे. और जो आपको क्लासरूम से पढ़ाया जाता है एन्युटीज़ जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों. तो एन्युटीज़ आर द कॉन्ट्रैक्ट्स दैट गारंटीड इनकम और रिटर्न in exchange of a huge sum of money that is deposited either at the time or is paid with the help of periodic payment. Some of the common types of annuities included the deferred, fixed, immediate, or variable variants. Arbitrage. Arbitrage is the simultaneously purchase and sale of the two identical commodities or instrument. This simultaneously sale and purchase is done in order to take the advantage of the price variation in two different markets. For example, purchase of gold in one nation and the simultaneously sale in another. आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट. दोस्तों ये टर्म्स बहुत ही कॉमन है, बहुत जगह पे आपको देखने को सुनने को मिलते हैं, बहुत एग्जाम्स में भी आपने ये सब टर्म्स वगैरह देखे होंगे. द आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन विद द हेल्प ऑफ विच अ बायर परचेजेज real estate from the seller over a period of time and pays the consideration in installment. This type of agreement or contract is also known as a land contract. असाइनमेंट. दोस्तों अगर किसी कॉलेज में है, ABYB में या कहीं भी है, असाइनमेंट तो आपको भर भर के लिखने पड़ते हैं, देखने को मिलते हैं. तो असाइनमेंट को आप डिफाइन कैसे कीजिएगा इन द बैंकिंग फील्ड में? In the field of banking and finances, an assignment is the transfer of any contractual agreement between two or more parties. The party that assigned the contract is the assigner and the party who received the assignment is the assignee. ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM, जिससे आप लोग पैसे निकालते हो. और आजकल तो ATM में बहुत सारे कुछ देखने को मिलते हैं. आप मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो, अपना पिन नंबर चेंज कर सकते हो, चेक बुक मंगा सकते हो, बहुत कुछ आप अभी ATM से कर सकते हो. जो हम एक्सिस बैंक के ATM में देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं. बट ऑटोमेटेड टेलर मशीन आर बेसिकली यूज टू कंडक्ट ट्रांजेक्शन विद द बैंक इलेक्ट्रॉनिकली. The automated teller machine is an excellent example of integration of computer and electronics into the field of banking. What is balance? जो पैसे आपके अकाउंट में होते हैं उसे बैलेंस करते हैं. बट इसे डिफाइन कैसे करते हैं दोस्तों? द बैलेंस इज द actual amount of money that is left in the account. Sometimes the term balance also refer to amount of the debt that is owed. खुद के पैसे को बैलेंस करते हैं. व्हाट इज़ बैंक? या दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्स में हो सकता है इस बार देखने को मिल जाए. अ बैंक इज़ एन एस्टेब्लिशमेंट दैट हेल्प्स इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द इशूइंग, लेंडिंग, बोरोइंग एंड सेफ गार्डिंग फंक्शनिंग ऑफ मनी. व्हाट इज़ बैंक अकाउंट? दोस्तों हर व्यक्ति के पास आजकल एक एक बैंक अकाउंट नंबर होता ही है, चाहे वो किसी भी बैंक में हो. बट उसे डिफाइन कैसे करेंगे? A bank account is an account held by a person with a bank, with the help of which the account holder can
deposit, safeguard his money, earn interest and also make check payment. इंटरेस्ट दोस्तों अभी सेविंग अकाउंट पे 3.75 से 4% पे अभी चल रहा है. What is bankruptcy? A bankruptcy referred to economic insolvency wherein the person's assets are liquidated to pay off all the liabilities with the help of bankruptcy trustee or a court of law. व्हाट इज़ बॉन्ड. बोल रहे ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सर इस जॉब में बॉन्ड होगा क्या, एक्सिस बैंक ABYB में बॉन्ड है क्या. तो दोस्तों एक्सिस बैंक ABYB में कोई बॉन्ड नहीं है. आप चाहे तो 6 महीने बाद भी छोड़ सकते हैं या फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट आपका जॉब सिक्योर होता है. जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक आपके हाथ में ये जॉब रहेगा. तो बॉन्ड क्या कहते हैं दोस्तों. अ बॉन्ड इज अ सर्टिफिकेट दैट रिप्रेजेंटेड एन इंटरेस्ट बियरिंग डेप्ट वेयर the issuer is required to pay a sum of money periodically till the maturity and then receive back accumulated amount. Borrower. A borrower is the party that uses any kind of credit facility and thus become obligated to repay the principal amount and interest on the borrowed amount. व्हाट इज़ बाउंस्ड चेक. बहुत सारे दोस्तों मैं जब अभी बैंक में भी डील कर रहा हूँ, सर मेरा चेक बाउंस हो गया है, उसके चार्जेस कट गए हैं, चेक बाउंस है, मुझे ये हुआ है, मैंने इतने का चेक दिया था क्लियर नहीं हुआ है. तो क्वेश्चंस आते हैं सर चेक बाउंस हो गया है, तो लेकिन चेक बाउंस होता क्या है. अ बाउंस चेक इज़ नथिंग बट एन ordinary bank check that any bank can refuse to encash or pay because of the fact that there are no sufficient finances in the bank account or the originator or drawer of the check. व्हाट इज़ कैपिटल. बोलते हैं ना मेरे पास कैपिटल इतना है, मेरे पास पैसे इतने हैं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल चाहिए, बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए. बट कैपिटल को टर्म में कैसे डिफाइन करें दोस्तों. द टर्म कैपिटल मीन्स द टोटल नेट वर्थ ऑफ एनी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन और कॉरपोरेशन ऑफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर ए फाइनेंशियल रिटर्न्स. जो इसमें हमें रिटर्न मिलेगा. कैश, पैसा. बैंकिंग टर्म्स में कैश टेलिंग भी होती है, बहुत कुछ होता है, बट मेनली होता है कैश टेलिंग. तो पैसा, कैश. कैश को डिफाइन कैसे करते हैं. बिल्स एंड कॉइन्स, चेक्स एंड अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट आर एक्सेप्टेबल एट द बैंक्स एंड आर कंसिडर्ड टू बी लिक्विड एसेट आर कलेक्टिवली नोन एज कैश. लिक्विड एसेट का मतलब होता है दोस्तों कि आप जब चाहें तब उसे इन कैश करा सकते हैं. जैसे कि गोल्ड, सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट में गोल्ड आता है, ताकि जब चाहे आप उसे सेल कर सकते हैं और उसे इन कैश करा सकते हैं. कैश फ्लो. द कैश फ्लो इज ऑफन डिफाइंड एज द लिक्विड balance of cash as well as the bank balance that is available with an organization or a corporation. In some cases, the cash flow is also defined as the net amount of cash that is generated by the net income that has been generated by an organization or corporation in the particular time period. What is cash reserve? The cash reserve is the total amount of cash that is present in the bank account and can also be withdrawn immediately. व्हाट इज़ चेक. दोस्तों कैश रिज़र्व एक है और कैश रिज़र्व रेशियो है जो कि बैंक जो है डिपॉजिट करती है RBI के पास, ताकि एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन या टाइम ऑफ कुछ भी इमरजेंसी हो तो वो कैश जो है बैंक RBI जो है बैंक को रिटर्न कर सके. व्हाट इज़ चेक. चेक हम लोग जब भरते हैं इंस्ट्रूमेंट है ये, तो चेक को आप डिफाइन कैसे कीजिएगा. बैंकिंग चेक. A check is a negotiable instrument that instructs the bank to pay a particular amount of money from the writer's to the writer's bank to the receiver of the check. What is clearing? Clearing of a check is basically a function that is executed at the clearing house when all amount of the check is subtracted from the payer's account and then added to the payer's account. What is co-borrower? The co-borrower is a person who signs a promissory note as a guarantee that the loan would be repaid. Thus, the co-borrower plays the role of guarantor and is equally responsible for the loan. अगर किसी ने लोन लिया है और उसका कोई co-borrower है, तो जिसने लोन लिया है अगर वो रीपे करने में
सफिशेंट नहीं है तो को बोरोवर का के ऊपर आ जाता है कि वो पूरा का पूरा लोन उनको दे। What is compound interest? Compound interest is the interest that is compounded on a sum of money that is deposited for a long time. The compound interest, unlike simple interest, is calculated by taking two considerations, the principal amount and the accumulated interest. What is debit? Debit is a banking term that indicates the amount of money that is owned by a borrower. It is also indicate the amount that is payable or the amount that has been deducted from an account. The origin of the term is from the concept of debit side of a ledger account. Deed. A deed is a very important document that indicates the ownership of an asset, especially real estate. The deed is also used to convey the property from the seller to the buyer. सेल डीड बनता है दोस्तों जब आप प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं। Deposit slip. A deposit slip is a bill of itemized nature and depicts the amount of paper money, coins, and the check number that are being deposited into a bank account. Depreciation. The degradation in the book and monetary value of a fixed asset as a result of wear and tear in the course of time. Debentures. Debentures are long-term corporate bonds that are unsecured in nature. It must be noted that the debenture holders are not protected by any collateral tend to the treated like ordinary creditors. What is discount? In the term of banking, in the term discount is used when any negotiable instrument is converted into cash. For example, a person can exchange a bearer check for cash with the amount being little less than the face value of the check. This method is used by merchants who are in a dire need for liquid finance. TINS defined is written from the banking point of view but has variable meanings. What is dividend? A dividend is a part of profit that is earned by a corporation or joint stock companies and is distributed amongst the shareholders. What is e-cash? Also known as electronic cash and digital cash. E-cash is technology where the banking organization resort to use of electronics, computers, and other networks to execute transactions and transfer funds. Encryption. Encryption is a process that is used to ensure the privacy and security of a person's confidential financial information. The actual process involves scrambling of the data of the person in such manner so that only the person himself can see the data. What is exchange? An exchange is a trade of property, asset, goods, or service for consideration of any kind. Exchange rate. What is exchange rate? An exchange rate is basically a rate with the help of which one's country's currency can be exchanged with the currency of another country. Endorsement. Endorsement is basically handing over a right of a financial, legal document or negotiable instrument to another person. The person who hands over his rights is known as the endorser, and the person whom the rights have been transferred is known as the endorsee. Financial instrument. A financial instrument is anything that range from cash, deed, negotiable instrument, or for the matter, any written and authenticated evidence that shows the existence of a transaction or agreement. What is financial statement? A financial statement is a record of historical financial figure, reports, and record of asset, liabilities, capital, income, and expenditure. What is free cash flow? A free cash flow is basically the total financial liquid asset that does not include capital expenditure and dividend. Foreign currency surcharges. The foreign currency surcharges is levied by some banks and credit card companies when the credit card or the ATM is used for the foreign country. What is grace period? A grace period is an interest free period that is to be given by a creditor to the debtor after the period of the loan gets over. Before initiating the process of loss recovery, the grace period depends on the amount of the loan and also the credit score of the borrower. What is gross income?
Gross income is the total income of a person, organization, or corporation in one financial year before making any deduction. What is guarantor? A guarantor is a creator of trust who can take the responsibility of the repayment of a loan and is also in some cases liable and equally responsible for the repayment of the loan. What is interest? Interest is a charge that is paid by any borrower or debtor for the use of money, which is calculated on the basis of rate of interest, time period of the debt, and the principal amount that was borrowed. Interest is sometimes also titled the cost of credit. What is interest rate? Interest rate is the percentage of principal amount that is paid as an interest of the sum of money. Usually, the interest rate is decided by country's central bank on the basis of economic condition. Country's central bank in India is RBI, Reserve Bank of India. Internet banking. Internet banking is a system wherein customer can conduct their transaction through the internet. This kind of banking is also known as e-banking or online banking. What is lease? A contract through which the owner or lessor of a certain property allow another lessee to use the same for a specific period in exchange for value called the rent. लेटर ऑफ क्रेडिट दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है ये लेटर ऑफ क्रेडिट। जब आप ABYB में हैं तो समझ जाएंगे सेकेंड सेमेस्टर में लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है, बट इसे मैंने जितना छोटा हो सकता है उतने छोटे में कोशिश किया है डालने की। अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द बायर और द importer stating its commitment to pay a third party, that is seller or the exporter, a specific amount for the purchase of goods by its customer who is the buyer. The seller has to meet the condition given the document and submit the relevant documents in order to receive the payment. Letter of credit are mainly used in international trade transaction of huge amounts wherein the customer and the supplier live in different countries. What is mortgage? A mortgage is a legal agreement between the lender and the borrower where real estate property is used as the collateral for the loan in order to secure the payment of the debt. According to the mortgage agreement, the lender of a loan authorized confiscate the property the moment of the borrower stop paying the installments. What is overdraft or OD? As the name suggests, it is a check or rather than an amount of check which is above the balance available in the account of the payer. What is payee? A payee is a person to whom the money is to be paid by the payer. What is payer? A payer is the person who pays the money to the payee. पॉइंट ऑफ सेल POS एक मशीन आती है आजकल जिसे पॉइंट ऑफ सेल भी कहते हैं POS मशीन. The point of sale is a terminal where the cash registered are replaced by computerized systems. What is principal? Principal is a basic amount which is invested to yield return over a certain period of time at the given rate of interest. What is quick ratio? Quick ratio is also called as the acid test ratio. It measures the company's liabilities and determine its position to pay off its obligation. What is reserve account? An account which is maintained by depositing undistributed part of profit for future needs is called as the reserve account. What is return? The yield or earning at the end of given period at a given rate of interest. What is risk? Risk is a very vast, but I written in very short, so risk management is there. It's a book almost. So the probability of threat, danger, damage, liability, or loss is called as risk. What is sale contract? A sale contract refers to a written agreement between the buyer and the seller of an asset, usually real estate, with detail regarding the terms and conditions for the sale. What is secured loan? A loan which is backed by a pledging of real or personal property as collateral by the borrower to the lender, unlike the unsecured loan which is backed by a mere promise by the borrower that he will repay the loan
In case of a secured loan, the lender can initiate a legal action against the borrower to reclaim and sell the collateral, that is pledged property, or is term insurance. It is the insurance for a certain time period which provide for no deferral to the insured individual, excluding losses during the period that becomes null upon its expiration. Wholesale banking. Wholesale banking is a term used for a bank which offers service to other corporate entities, large institute and other financial institute. Withdrawal. Removing a fund from bank account is called as making a withdrawal, पैसे निकालना. Working capital. In banking term, working capital is defined as the difference between current asset and current liabilities. What is yield? The return earned on a stock or bond as per the effective rate of interest on the effective date is called as yield in the banking terms. What is zero balance account? जो कि अभी एक्सिस बैंक में वी आर प्रोवाइडिंग एसएप अकाउंट दैट इज ऑल्सो नोन एज जीरो बैलेंस अकाउंट बट हेयर अ बैंक अकाउंट विच डज नॉट रिक्वायर एनी मिनिमम बैलेंस सिस्टम एज द जीरो बैलेंस अकाउंट. तो दोस्तों ये था आज के लिए इतना ही प्रेजेंटेशन था जो मैंने खुद तैयार किया हुआ है, तो इसे आप शेयर करें. और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा. तो दोस्तों चलिए इस प्रेजेंटेशन को ख़त्म करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं. जैसा कि आपने देखा दोस्तों, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने अपने वीडियोस में अभी लिए हैं और आने वाले वीडियोस में भी और भी बहुत कुछ लेना बाकी है रिगार्डिंग एग्जाम्स, रिगार्डिंग इंटरव्यू, रिगार्डिंग सब कुछ जो कि हम अपने चैनल के थ्रू आप तक जरूर बताएंगे. तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचे. तो प्लीज़ दोस्तों, शेयरिंग इज केयरिंग एंड शेयरिंग मीन्स शेयरिंग योर नॉलेज. तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं. मैं रवि प्रकाश, अनरियल बैंकर, साइनिंग आउट.